Hello students, today we are going to start with our new chapter, that is digital documentation. As I have told you in class, that's due to some there is some problem, that's why I am sending you the videos of practical so that we should know everything practically in a computer. So I request you all to do watch this video sincerely and carefully. Do understand it in a better way. I am again going to revise this chapter in classroom as well in our lecture, but I want you guys to know everything practically, that how we are performing practical, what things we are using and where we are using, how we are doing formatting or whatever, how we are opening a file, saving a file. All the things I want you guys to understand properly through a practical, not only through theoretical, through practical. That's why for you I am sending this video. So it's my request to you guys to watch this video. Okay, so let's start with our chapter number 3. As I have informed you guys earlier in classroom that our chapter number 3 is digital documentation. In this chapter number 3, there are total 6 sessions, means from the beginning, that how to create a file, how to create a word file, from that till the end, that is mail merge. All the things we are going to see once again. You have learned all these points in your previous classes, but we are going to see them once again as a part of revision, or whatever we can call it, for memorizing all these things. We are going to see them once again. So let's start with our first session, that is session number 1, word processing application. The first session from this chapter number 3, digital documentation, is word processing application. Okay, so what we are going to learn in session 1. So in session 1 we are going to learn in session 1, that is word processing application, we are going to learn what is word processing, introduction to MS Word. You all know MS Word means Microsoft Word, how to use it. So you all know it, that how to create, save, close, open, exit, and cursor and mouse pointer. These all things you all know very well, but once again we are going to revise it. Okay, so before proceeding further towards word processing software, it is word processing application. By mistake I have written here word processing software. So the session name is word processing application. Now what is meant by word processing application? वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन मतलब क्या होता है ना, कि ऐसे सॉफ्टवेयर जिनके थ्रू हम डॉक्यूमेंटेशन रेडी कर सके. जैसे हम नोटबुक में हम हमारे क्वेश्चन आंसर लिखते हैं ना, उस तरह हम हमारे सॉफ्टवेयर में हम लिख सके, हम हमारा डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट कर सके. ऐसे सॉफ्टवेयर्स को, ऐसे एप्लीकेशंस को वी कॉल्ड इट एज वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन. ओके, नाउ सो बिफोर प्रोसीडिंग लेट मी रिमाइंड यू, अभी हम लोग सॉफ्टवेयर नॉर्मल यूज़ करते हैं, तो मैंने आपको क्लासरूम में भी यूज़ किया था. व्हेन आई टॉट यू अबाउट कीबोर्ड, तब मैंने आपको एक वर्ड यूज़ किया था, टाइप राइटिंग क्लासेस. टाइपराइटर और टाइपिंग क्लासेस, दिस वर्ड आई हैव यूज. टाइपिंग क्लासेस क्या होता है या क्या होता है, तो एक टाइपराइटर होता है जिसके थ्रू टाइपिंग की जा सकती है. उसके ऊपर स्क्रीन नहीं होती है, जस्ट अल्फ़ाबेट्स होते हैं, और प्रिंट हमें जैसे ही हम टाइपिंग करते हैं वैसे प्रिंट बाहर आती जाती है. ओके, तो वो होता है टाइपराइटर. सो टाइपराइटर वॉज अ डिवाइस विच वॉज यूज्ड इन अर्लियर डेज फॉर डॉक्यूमेंटेशन. पहले के ज़माने में लिखने, टाइपिंग हम किस पे करते थे, टाइपराइटर पे करते थे. बट आज के ज़माने में, इन टूडेज era or in today's generation, what we are using applications for documentation. In earlier days there was a typewriter. Okay, now we are having applications in which we can do documentation of our information. Okay, so for that purpose we required word processing softwares, word processing applications. So let's proceed further with word processing application. So as I told you, word processing. So word processing application is a application in which we can create information, means we can create the file, we can edit the information, we can format the information with bold, italic, underline, background color, foreground color, and many things. Okay, so these type of softwares are known as a word processing software. So what are the different types of word processing software?
So the word processing software are Notepad. You already have seen the Notepad, WordPad. Then there is a LibreOffice writer. Okay, there is a LibreOffice writer, Apache Office, Open Office writer, and Google Docs. These all are word processing software. So the use of this all software is little bit same. There is little bit difference like in Notepad. Now Notepad is a simple word processing software. आपने Notepad देखा है ना, ये simple word processing software है जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, आप टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हो, आप एक क्रिएट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, फाइल को ओपन कर सकते हो, देन रीड कर सकते हो. इवन यू कैन डू फॉर्मेटिंग लाइक बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन इन नोटपैड. ओके, तो ये सारी चीज़ें आप नोटपैड में कर सकते हो. बट वर्ड पैड बोलो या फिर MS वर्ड बोलो, तो उसमें अपने को एक फैसिलिटी एक्स्ट्रा होती है. क्या कि आपको जो फॉर्मेटिंग फीचर्स है ना नोटपैड में बहुत कम होते हैं. नोटपैड में सिर्फ आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ले सकते हो. बट वर्डपैड हैज़ गिवन यू द फैसिलिटी टू इंसर्ट अ पिक्चर थ्रू पिक्चर ग्रुप और थ्रू क्लिप आर्ट, एंड देन you can apply text formatting, and many things you can do in your WordPad or in your MS Word. Okay, so now I hope that you might have understood difference between Notepad and WordPad. Notepad has less formatting features, WordPad has more formatting features. Now next one is Google Docs. Now what is Google Docs over here? जैसे मैंने आपको क्लास में बोला था, गूगल डॉक्स इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि सेम हमारे MS वर्ड की तरह ही होता है. उसके अंदर भी हम पिक्चर ले सकते हैं, देन हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, टेक्स्ट रैपिंग, वॉट एवर वी आर डूइंग इन वर्ड, अलाइनमेंट वगैरह वो सब हम गूगल डॉक्स में भी दे सकते हैं. Then next one is LibreOffice. Okay, LibreOffice, or we can also call it there is another form that is Apache Open Office Writer. So what are these? So these are advanced word processing application. क्या है ये advanced word processing application है. मोस्टली ये एप्लीकेशन जो है LibreOffice Writer, जो मैंने आपको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम या Mac OS operating system बोल रहे हैं, that is command based operating system. In those operating system mostly these word processing softwares are used, that is LibreOffice Writer and Apache Office Open Office Writer. Okay, so these are advanced operating system which are open source. Same way मैंने Linux आपको बोला था ना, Linux operating system open source है, तो mostly Linux, Unix operating system जो होते हैं, Mac ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मैक OS, उस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम में दिस LibreOffice Writer and Apache Open Office Writer softwares are used, but the features in these softwares are the same like our MS Word. Okay, so I hope guys you understood the different word processing application. We are again going to revise it tomorrow, so let's proceed with the further points. So our next point over here is introduction to MS Word. The next point from this is introduction to MS Word. So next point after word processing we are going to learn is introduction to MS Word. That is introduction to MS Word. If you all know that what is MS Word. MS Word is a documentation software. It is a software which is created by Microsoft publication. It is developed by Microsoft in 1981. MS Word is a software that is developed by Microsoft company. It is a software company and they have developed this software for documentation in the year 1981. Okay, so it was developed in 1981, but officially it was released for the public, for the people in 1983. Now as I told you, this software is used for documentation, means in this software we can do editing, we can do many things like how to start. We are going to start with how to start MS Word. We are going to see elements of MS Word. We are going to create a document. We are going to see a document, close a document, and opening an existing document. So all these points we are going to see in this document. Okay, so how to do that? Let's start. Okay, so first point over here is introduction to MS Word. So we want to go in MS Word. Now this is my Windows 10, that's why you can see the difference. Okay, so for starting MS Word you have to click on a start. Now my start is different from the start which you have seen. My start button is different. So here I have to go below and I have to search for Microsoft Office. Okay, so here I am searching for Microsoft Office. So here
Microsoft. ओके आई होप यू गाइस रिमेंबर कि हमें कहाँ जाना होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हमें यू हैव टू गो ऑन अ स्टार्ट बटन यू हैव टू क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स यू हैव टू क्लिक आफ्टर दैट यू हैव टू गो इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड वॉट एवर द वर्जन माइट भी उस पर क्लिक करना है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल ओपन हो जाती है तो मैं यहाँ से डायरेक्टली सर्च कर देती हूँ डेट इज MS वर्ड मुझे मेरी फाइल मिल जाएगी सो हियर इट इज माई वर्ड so it's getting open so how to getting started with MS Word तो MS Word में आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो आप क्या कर सकते हो सीधा आपको क्या करना होता है सबसे पहले MS Word को स्टार्ट करने के लिए आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना होता है जो कि इधर होता है आपका फिर इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन आता है ऑल प्रोग्राम्स यू कैन सी द व्यू ऑफ माई लैपटॉप हैज़ बीन चेंज तो आपके इसमें ऑल प्रोग्राम्स रहेगा ऑल प्रोग्राम्स में जाके आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस you have to search and in Microsoft Office you have to select a Microsoft Word and open the file in this way you can get started with your MS Word okay so now let's open my MS Word file so this one is my MS Word file I am opening it so here this one is my MS Word file in this MS Word file now we will see the elements of MS Word we have started with MS Word मतलब MS Word को कैसे स्टार्ट करना है वो हमने देखा अब एलिमेंट्स देखना हम MS Word के कौन से हैं यू ऑल नो देम हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे जस्ट एज अ पार्ट ऑफ रिवीजन लूंगी so in MS Word here you can see document 1 dash word okay this one is the title bar as you all know कि जब हम फाइल को सेव करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है टाइटल बार आ जाता है then here you can see from फाइल से लेके तो ये पूरा आप जो देख रहे हो this rectangle you can see this rectangle over here this one is a ribbon now what this ribbon contains so this ribbon contains different tabs and in that tab there are different groups like there is a file tab okay then home tab which contain clipboard font paragraph style and editing group then there is a insert tab which contain pages tables illustration add-ins media links comments header and footer text symbol group okay next one is design same way every group is having every menu or every item over here that is home insert design is having different groups like in design there is a document formatting and page background in layout there is page setup paragraph and arrange group in reference there is table of contents footnotes research caption index table of authors same way in mailing there is a create start mail merge write and insert field preview result finish so you can there are different groups in every menus like in review view you can go over there and you can see the menu okay so the ribbon contains different menu items of word file and those menu items has different groups inside them like home insert review page layout view all these are different menus then there is the next one over here in this is quick access toolbar अभी quick access toolbar होता क्या है ना तो ये आप जो देख रहे हो ना यहाँ पे this one is a shortcut button मैं अभी ये यहाँ पे जो है ना क्लिक कर रही हूँ you can see कि हम SEO पे चले जाते SEO as पे चले जाते so this one is the shortcut then this one is the undo tab this one is the redo tab and this one is the कस्टम क्विक एक्सेस टूल बार ओके तो ये होता है कस्टम क्विक एक्सेस टूल बार इसका यूज आपने सीखा होगा इन लोअर क्लासेस नहीं सीखा होगा तो यहाँ पे अपने को इस सेशन में से किसी एक सेशन में इसका यूज देखने को मिल जाएगा देन नेक्स्ट वन इज डॉक्यूमेंट एरिया ये जो व्हाइट एरिया देख रहे हो आप दिस वन इज कॉल्ड एज डॉक्यूमेंट एरिया देन हियर यू कैन सी अ पॉइंट ये जो पॉइंट ब्लिंक कर रहा है ओके दिस वन इज द कर्सर ये क्या है कर्सर होता है then here you can see page 1 of 1 तो ये क्या है this one is a status bar ये क्या है page 1 of 1 0 words English the language in which we are typing it is English so this one is the status bar then next one is the document view here there is a document view that is read mode print layout and
web layout. So these are the modes available on my MS Word. In your textbook there are web layout, print layout, full screen reading, outline view and draft view. In my Word there is a read mode, print layout and web layout. Now next one is a zoom in and zoom out slider. So here you can see this one is a zoom in and zoom out slider. After that, here I am not having a ruler on my Word, but in your textbook you can see in every MS Word there is a ruler. Mine is advanced. In MS Word 2007 or MS Word 2010 you can get to see the ruler. In my MS Word there is no ruler. Then next one, here you can see there is a scroll bar. So if you type more words over here you will get the horizontal scroll bar as well. So this one is the vertical. So this one is the one of the scroll bar over here, that is vertical scroll bar. And then what is the last point in your एलिमेंट्स ऑफ MS वर्ड इज अ बैक स्टेज. बैक स्टेज मतलब क्या, जब आप फाइल मेन्यू पे जाते हो ना तो इस स्टेज को कहा जाता है बैक स्टेज. दिस वन इज अ बैक स्टेज. यहाँ से आप क्या करते हो, ब्लैंक डॉक्यूमेंट वगैरह आप सिलेक्ट कर सकते हो या फाइल को सेव, ओपन या प्रिंट या क्लोज कर सकते हो. सो दिस ऑल आर द एलिमेंट्स ऑफ MS वर्ड. ओके, सो आई होप गाइस आपको समझ में आया कि MS वर्ड क्यों लगता है और MS वर्ड के एक्चुअल एलिमेंट्स कौन से हैं. नाउ लेट्स सी हाउ टू क्रिएट MS वर्ड. तो MS वर्ड को क्रिएट कैसे किया जाता है, सिंपली आपने अभी जस्ट देखा. क्या करना है, फाइल पे क्लिक करना है. आफ्टर क्लिकिंग ऑन फाइल यू हैव टू क्लिक ऑन ब्लैंक डॉक्यूमेंट एंड एज यू क्लिक ऑन ब्लैंक डॉक्यूमेंट तो आपकी फाइल मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर क्रिएट हो गई है. बट अगर आप पुराना वाला सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो तो उसके अंदर आपको क्या करना है, फाइल पे क्लिक करना है. यू हैव टू क्लिक ऑन न्यू, यू हैव टू क्लिक ऑन ब्लैंक डॉक्यूमेंट एंड क्रिएट ऑप्शन होता है. यहाँ पे क्या होता है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद ना एक ऑप्शन आता है क्रिएट, उस पर क्लिक करना होता है, तब आपकी फाइल क्रिएट होती है. यहाँ पे मेरे इसमें क्रिएट का ऑप्शन नहीं है, डायरेक्टली क्लिक करके ब्लैंक डॉक्यूमेंट मुझे मिल जाता है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट फ्रॉम दिस इज सेविंग अ डॉक्यूमेंट. हाउ टू सेव अ डॉक्यूमेंट. तो MS वर्ड की डॉक्यूमेंट किस तरह सेव की जाती है, क्लिक ऑन अ फाइल, क्लिक ऑन सेव और you can click on save as well. किसी पे भी क्लिक करो. I am clicking on save. After clicking on save I have to select my destination, that is this PC is my destination. In this PC I want to go on a folder that is 9th, so I will search for a folder over here. Here I am going to search for a folder. So on this, here my folder is in new volume D drive and 9 class notes. So I want to save it over here. So I have to give here name to the file, and as I told you that you have to select a type of file, means you have to give the extension for the file. The extension that we are using for MS Word file, as I told you guys earlier as well, that is .docx. okay, and you have to click on save or you can press enter key and you can save the file. So you can, in this way you can save your file. Now next, you want to close your file. So how you can close your file, click on file, click on here, you can see you have to click on a file. After clicking on file you will get the option called close. So click on close, your file is being closed. okay, now you want to open an existing file. पहले जो फाइल आपने खोल के रखी थी उसको आपको बंद करके रखी थी उसको आपको खोलना है. तो किस तरह खोलोगे, so go on a word file on a blank document. After going on a blank document, click on a file, click on open to open your previous file. Now here there is one file, that is chapter 9 using email services. I am clicking over here. So it was renamed, that's why it's not getting open. I am again clicking on open. I am opening some other file. So here, so this one is the file I have opened over here. Again I am going on a, so this one is a PowerPoint Word. Just hold on. So here I want to open a file. So click on a file, click on open. After clicking on open, I want to select here, this one is the chapter. I am selecting the chapter. Actually I have deleted a file, that's why it's not opening. Let me check a file.
So here is your so here you have to click on open. After clicking on open, here if I am having any of the file, I will open the file, like here computer monthly test, open. So here this one is so just what you have to do for opening a file, you have to click on open. After that, clicking on open, you have to go in a drive. After going in a drive, here you will find just go in a drive wherever your files are. Like if there is a file in my any of the drive, I am clicking in a drive. Okay, here I am not having any of the word file, so I am searching it. Here is the word file. I have clicked over it. I have clicked on open. I have clicked on a drive. I have selected my file from a folder and I am saying open. So in this way you can open your file. Okay, this is the way in which you can open your file. Now next point over here, and the last second point from your this chapter is exiting word. वर्ड से कैसे बाहर जाना है, तो एग्जिट कैसे करना है वर्ड से, तो क्या करना है, फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पे फाइल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा एग्जिट. मेरे इसमें वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है. आपके फाइल आपके इफ यू आर यूजिंग ओल्डर MS Word, in that you will get exit option. In my MS Word, the exit option is not available. So what you can do, the second way you can apply directly, you can go in a file and you can click on a cross, your file will be closed. Okay, so in this way you can exit from a word. Now the last point remaining from this chapter is cursor and mouse pointer. So this point we will see in classroom. Okay, we will see theoretically in classroom.